Okay, beta. So let's start with the first chapter of AS, which is atomic structure. ठीक है? Before I start atomic structure, हम थोड़ा सा let's talk about how many papers you have to give in your AS level. ठीक है? कौन-कौन से papers हैं and how you what is the weightage and all this stuff. So basically, in chemistry, you have to appear in a similar P1 MCQs paper में appear होना होगा, ठीक है? That's going to be 40 marks and इसका जो time allocation है it's 1 hour and 15 minutes, ठीक है? That's the new format of P1. And so P1 is basically MCQs. I'm not going to give like spend more time on this one because it's same for chemistry, same for physics, and same for bio. So it's going to be the same. In a similar way, you have paper 2, which is 60 marks paper. और ये बिल्कुल वैसे ही paper 2 है जैसा आपका paper 2 O levels में. That's basically a structural question paper, and again it's going to be 1 hour 15 minutes as well. So this is a structural question paper, paper 2. It consists of structural questions, and then you have paper 3, which is the practical examination. Practical exam is basically 2 hours exam, almost like 60 marks का paper आपका होता है. So you have to appear in all these 3 papers this year for AS. In addition, you have to appear for paper 4 and paper 5 in A2. So altogether in A levels chemistry, you have how many papers? Altogether you have 5 papers in A levels chemistry. ठीक है? जिसमें से आप 3 papers आप AS में देंगे और 2 papers आप A2 में देंगे. Now basically AS level is 50% of your A levels, ठीक है? The remaining 50% is A2. क्लियर? जिसमें 2 पेपर हैं और यहाँ 50% में आपके पास 3 पेपर हैं, जिसमें से AS लेवल की अगर हम बात करें तो या ओवरऑल ए लेवल्स की बात करें तो 11.5% इज पेपर 3 एंड द रिमेनिंग 50% में से 11.5 माइनस कर दो, जो बच जाएगा उसमें पेपर 2 और पेपर 3 होगा, पेपर 1 होगा. पेपर 2 की वेटेज इज मोर देन पेपर 1. So basically, in theoretical part, we focus more on paper 1 and paper 2. यहाँ पे हम paper 1 और paper 2 की बात करेंगे. And मेरी आदत यह है कि right after giving you a concept, मैं उससे relevant कुछ MCQ solve करते हैं हम क्लास में ना, क्योंकि देखो जो कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है ये कैसे पता चलता है, ये MCQ से पता चलता है. ऐसे ही है ना. सो हम MCQ सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं. ऑब्वियसली थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे, थोड़ी सी चीजें नहीं समझ आ रही होंगी, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स विल गेट इम्प्रूव एंड आई श्योर यू कि आपको बात समझ में आने लगेगी. फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, यस, फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स आपको अभी नहीं, थोड़ा अरसे बाद जो है वो आपको प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन शुरू करनी है. इट्स टू अर्ली फॉर प्रैक्टिकल्स. नॉर्मली नवंबर दिसंबर या जनवरी ऑनवर्ड भी प्रैक्टिकल्स कवर हो जाते हैं. ठीक है. My responsibility is for paper 1 and paper 2 and we have separate system for practicals. यहाँ पर होगा या फिर हम कहीं आपको सजेस्ट कर देंगे. कॉलेजेस में प्रैक्टिकल शुरू हो चुके होंगे, टाइट्रेशंस वगैरह ये सारी चीजें करवा रहे होंगे. ठीक है. सो आई फोकस मोर ऑन पेपर 1 एंड पेपर 2. प्रैक्टिकल से रिलेटेड रेदर देन परफॉर्मेंस, मेरा थ्योरेटिकल पार्ट चूंकि मैं कवर अप कर रहा हूँ, सो कैलकुलेशन और रीजनिंग से रिलेटेड सारी बातें मैं आपको बिफोर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन उसके लिए ट्रेनिंग करूंगा. ठीक है. तो क्लियर वही MCQs पेपर है पेपर 1 पेपर 2. और फॉर्मेट ये होगा कि विद इन अ क्लास आफ्टर एवरी चैप्टर, चूंकि हम काफी क्वेश्चन उस चैप्टर के बीच में कर चुके होंगे, आई एम गोइंग टू solve the topical question papers for paper 1 and paper 2. Topical questions हमारे 2003-4 से 2018 तक के होंगे. 19, 20, 21, 22 ये ऑनवर्ड पेपर जो हैं इसके टॉपिकल नहीं करेंगे. ऑब्वियसली इसके टॉपिकल क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे और जिसमें जो प्रॉब्लम हो रही है हम हमसे पूछेंगे और फिर यही पेपर हम अपने ईयरली पेपर्स के सीक्वेंस में रखेंगे. ठीक है ना. 20, 22, 23 जब हम एंड में ईयरली पेपर कर रहे होंगे, सारे टॉपिकल कर लेंगे तो फिर ईयरली की प्रैक्टिस कैसे होगी, है ना. एग्जाम इज ऑल अबाउट शिफ्टिंग योर माइंड फ्रॉम वन क्वेश्चन टू अनदर क्वेश्चन विद इन दैट 1 hour 15 minutes. तो टॉपिकल से वो प्रिपरेशन नहीं हो पाती. तो जो रिसेंट ईयर के पेपर्स हैं वो हम ईयरली करेंगे और ईयरली उनके उनके हमारे सेशंस होंगे. ठीक है. सो दिस इज इट. इतना ही टाइम स्पेंड करूंगा फॉर द पेपर और इन सारी चीजों के ऊपर. सो लेट्स स्टार्ट विद द एटॉमिक स्ट्रक्चर. जी जनाब. एनीथिंग यू नो अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर? क्या जानते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड? कुछ भी, जो भी आप थोड़ा बहुत जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड.
Anything. Yes, we have atoms in which you have a center part, nucleus, and electrons are revolving around the nucleus. So the picture I have in mind for atomic structure is something like this, that you have a nucleus. ठीक है? In this nucleus you have protons and neutrons. ऐसे ही है ना? और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? Electrons are revolving around the nucleus. इलेक्ट्रॉन इसके around revolve कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से revolve कर रहे हैं. ठीक है? And they are revolving around the nucleus into a fixed path. और इन fixed path को हम क्या कहते हैं? They are called shells. ठीक है ना? Shell number 1 2 electron, shell number 2 8 electron, and so on. 2,8,8 जो आप लिखते थे. So basically this is one of the basic atomic structure of an atom. ये बहुत basic है. A levels में हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, ठीक है? And we are going to start from the O level standard. And the first thing कि आपको whenever I use the term subatomic particle, you should know about this term. ठीक है? Subatomic particle. क्या मतलब है subatomic particle का? हाँ भाई, subatomic particle का मतलब क्या है? Subatomic particle का मतलब है proton, neutron and electron. These are basically the subatomic particle. Protons, neutrons and electrons. So, the first topic about this subatomic particle है क्या atom में electrons, protons और neutrons के अलावा भी कुछ होता है? हमने शुरू से यही पढ़ा है. हाँ, we have new discover particles in an atom as well. Positron होता है and बहुत सारी नई चीजें डिस्कवर हुई हैं, मुझे तो नाम भी याद नहीं है बेसिकली. बट इन केमिस्ट्री we are only dealing with the major fundamental particles. These are the protons, neutrons and electrons. ठीक है? हम अभी तक केमिस्ट्री में सिर्फ इन्हीं को से डील करते हैं. हमारा न्यू डिस्कवर एलिमेंट्स पार्टिकल से कोई ताल्लुक नहीं है. रीजन सिर्फ ये है बेटा कि इन केमिस्ट्री we more bother about the physical and chemical properties of an element. हमें सबसे ज्यादा फिक्र किसकी होती है? फिजिकल. हम केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. All the physical properties of any element depends on the number of protons and neutron. यानी मास नंबर पे डिपेंड कर रहा होता है. ठीक है? And all the chemical properties आगे हम दोबारा करेंगे. All the chemical properties depends on number of electrons. तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही पढ़ते हैं. दैट्स इट. ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सो द फर्स्ट टॉपिक इज बेसिकली द नेचर एंड number of subatomic particle. The nature and number of subatomic particle. ठीक है? नेचर एंड नंबर ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल. अब मुझे बताइए कि सबएटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन. ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट द नेचर. उसके लिए मैं एक टेबल बना रहा हूं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट सबएटॉमिक पार्टिकल हियर. सबएटॉमिक पार्टिकल. Okay, and here is basically the relative charge, and here is the relative mass. ठीक है? दो चीजें करी हैं, relative charge and relative mass, and I'm just going to do it in a proper tabulated form. Okay जी, so ये हमने एक टेबल की फॉर्म में, सॉरी that's it. Clear? Okay जनाब, so the first particle I'm talking about is proton, and then we have neutron, and then we have electron. ठीक है? Fundamental subatomic particles. Clear? अच्छा जनाब, what is the charge of proton? Relative charge of proton? +1. उससे पहले let me ask you, what is the difference between the word charge and the relative charge? मैंने यहाँ relative charge लिखा है, charge नहीं लिखा. I should write charge and a mass of proton, but I wrote relative charge. Relative charge का मतलब what is the difference between the term relative charge and charge? इन दोनों words में difference क्या है?
या कोई डिफरेंस नहीं है? इफ देयर इज नो डिफरेंस, मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर कोई डिफरेंस नहीं है ना, तो द चार्ज ऑफ proton is basically 1 plus 1.6 exponential minus 21 coulombs. The charge of electron is minus 1.6 into 10 power minus 21 coulomb. जितना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इतना ही प्रोटॉन पॉजिटिव होता है. बात समझ रही है? So these are the actual charges. In chemistry, we are not talking about the actual charge. Physics में काम है, electricity में इलेक्ट्रॉन का actual charge देखा जाता है. Here we are bother about the charge of proton in comparison to the charge of electron. रिलेटिव का मतलब होता है इन कंपैरिजन विद समथिंग. सो यहां हम बात कर रहे हैं द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इन कंपैरिजन ऑफ टू न्यूट्रॉन, द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन. सो हमने कहा कि बेसिकली द रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज +1, सो इलेक्ट्रॉन इज -1. यानी जितना प्रोटॉन पॉजिटिव है उतना ही इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, एंड द न्यूट्रॉन इज बेचारा न्यूट्रल. ठीक है, द न्यूट्रॉन इज have a charge of 0. So this is the difference between the term charge and relative charge. I hope this is clear. Okay? Now, in a similar way, I'm not talking about the actual mass. I'm talking about the relative mass. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम relative term लिख लेते हैं. Relative term का मतलब होता है in comparison with something. ठीक है, in comparison to each other. Okay, if I ask you what is the mass of proton, so if the mass of proton is 1, the mass of neutron is also 1, exactly the same masses, and the mass of electron is 1 over 18, 40. आपने O levels में पढ़ा था ना, 1 over 18, 36, जिसको हम कहते हैं कि the mass of electron is basically negligible. बहुत छोटा है. ठीक है, so that's why it is called negligible. So the mass of electron is negligible. अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर mass of electron negligible है तो इस रेशियो का मतलब क्या है? What does this ratio 1 over 1836 means? इसका मतलब क्या है? इसको रिवर्स उल्टा बोलो. कहने से हाँ, ठीक है. देखो, नेग्लिजिबल या बहुत, हम आसान अल्फाज में उर्दू में कहते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उर्दू में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय द रेशियो 1 over 1836 या 1 over 1840. ओ लेवल्स में बोलते थे, एक्चुअल नंबर इज 1836. सो दिस रेशियो मींस इफ यू ऐड द मास ऑफ 1836 electrons, then it's going to be equals to 1 proton or 1 neutron. इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना हुआ? ना होने के बराबर हुआ, बिकॉज अराउंड 2000 इलेक्ट्रॉन्स का मास इज इक्विवेलेंट टू 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन. हैव यू सीन द वेट बैलेंस जो होता है, जिसमें एक तरफ आप स्टैंडर्ड वेट रखते हैं, ऑन द अदर साइड आपको जो चीज भी वे करनी होती है वो रखते हैं, और उससे फिर यूं होल्ड करते हैं. दैट्स कॉल्ड द पेन बैलेंस. So it's like on a pen balance, if you place 1836 electron on one side and you just place 1 proton on the other side, then it's equal to the same. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो ऑलमोस्ट लाइक 1836 टाइम्स कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नेग्लिजिबल. इस टर्म को भी यहां डिफाइन कर लेते हैं, दैट द मास ऑफ 1836 electrons is equals to 1 proton or 1 न्यूट्रॉन. ठीक है बेटा, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन. आई होप कि 1836 अब समझ में आ गया होगा कि व्हाट डज दिस मींस. ठीक है, दिस इज ऑल ओ लेवल्स. यू नो अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, रिलेटिव चार्जेस, रिलेटिव मासेस. हमें ऑलरेडी पता था, एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ लिया. बाय कीपिंग दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड, ठीक है, if I ask you a very simple question, and the question is about the deflection of particles in electrical or magnetic field. ठीक है, the deflection of particle in electrical field कर लेते हैं.
पार्टिकल्स का मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। ओके जी। अब इस रिफ्लेक्शन के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ वेरी सिंपल सी डायग्राम। लेट्स सपोज वी हैव अ सोर्स, दिस इज द सोर्स, ठीक है, and this source is emitting electrons, protons and neutrons, ठीक है। this is the source that emitting electron, proton and neutron, सही है। क्या चीज निकल रही है यहाँ से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। नाउ you have a positive charge plate here and a negative charge plate here, ठीक है। अब ये जब पार्टिकल निकल के जाएंगे ऑब्वियसली दे विल शो डिफ्लेक्शन, है ना। तो प्रोटॉन विल, सॉरी, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन विल मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, ठीक है, and negatively charged electron will deflect towards the positive plate and the neutron remains undeflected straight. So जरा ड्रॉ कीजिए इस डायग्राम को, कंप्लीट कीजिए अपने पास। So neutrons remain undeflected, ठीक है, and electrons और protons की deflection आपको शो करनी। डन, देखो सही है। ओके, प्रोटॉन, देखो बेटा इधर, प्रोटॉन की डिफ्लेक्शन होगी, these are the protons, okay, and this is the deflection of an electron. Key point क्या है? Electron deflected more as compared to proton because of their smaller size, ठीक है। तो हमें नोट करके क्या बात यहां लिखनी पड़ेगी? The deflection, इस साइड पे लिखते हैं, the deflection of electrons is more as compared to protons due to its smaller मास, ठीक है। लाइटर वेट पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करवाना इज मच मोर easier as compared to a heavier particle, ठीक है। So it is easier to deflect a lighter particle because the mass of electrons is negligible, ठीक है। So if they ask you to draw the deflection, normally A levels में पूछा जाता है deflection, you can easily draw it। मुझे ठंडा पानी समझ है, इसी को रिव्यू करते हैं। थैंक यू भाई, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, कोई इश्यू इसमें? नो, क्लियर है बेटा? सही है। सो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए ये टेबल, अगर आपको लग रहा है कि दिस इज, दे नेवर आस्क दिस टेबल इन ए लेवल्स, ये तो ओ लेवल्स का है, बट दे डू आस्क दिस टेबल इन ए लेवल्स एज वेल, तो ये हमारे ए लेवल्स का स्टफ है। इन अ सिमिलर वे दे आस्क यू टू ड्रॉ कंप्लीट दिस डायग्राम एज वेल, व्हिच इज द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो दिस इज द नेचर ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल। लेट्स टॉक अबाउट द नंबर ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। तो द नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ subatomic particles. And we're just holding it for a while and then we'll continue. Okay, beta. So after the nature of subatomic particle, let's talk about the number of subatomic particle. Means easy सा stuff है, आप O level से जानते हैं. Let's suppose if you are provided with the symbol of any element, जैसे कि let's take an example of a sodium, proton number 11 and nucleon number 23. So yes, as I said, this is called the proton number. ठीक है, the smaller one is always the proton number and this is the nucleon number. ठीक है, ये क्या है? ये nucleon number है।
So proton number is basically the number of protons or the number of electrons in any neutral atom. The number of proton and electrons are always same. That's why it is called neutral. जितना positive charge होगा उतना ही negative charge वहां पर होगा. And nucleon number is basically the number of protons plus neutron. ठीक है? Nucleon number is also called the mass number, अगर आपको याद हो, है ना? Mass number भी कहते हैं इसे. लेकिन the most common or the most appropriate term is basically the nucleon number, because the mass number MR की term में आ जाता है. ठीक है ना? तो basically nucleon number term is the more relevant term, but you can use the term mass number as well. वो average mass अलग होता है. ठीक है? So for this, if you have to find out the number of electrons, protons, and neutrons, so it contains 11 proton, 11 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे मास नंबर में से, न्यूक्लियॉन नंबर में से, जस्ट सब्ट्रैक्ट द प्रोटॉन नंबर. ठीक है ना? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से मैंने प्रोटॉन माइनस कर दिया तो बाकी क्या बचेगा. ठीक, क्लियर? So this is basically all about how to find out the number of electrons, protons, and neutrons into a neutral atom. ठीक है? Neutral atom में key point क्या है? It contains same number of protons and electrons. ठीक है? That's why it is electrostatically neutral. It contains the same number of protons plus electrons. Can you try Cl 1735? Magnesium 12, 24. Let's give me the number of electrons, protons, and neutrons. Yes. So protons 17, electrons 17, and neutron 35 minus 17, which is equals to 18. This is for Cl, chlorine. Agreed? Now let's talk about the magnesium. So again, the same proton are 12, electrons are 12, and neutrons are 12 as well. So it is possible that any atom contains the same number of electrons, protons, and न्यूट्रॉन. ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमेशा डिफरेंट होंगे, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स हमने करी हैं, जैसे इन दो एग्जांपल्स में द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डिफरेंट थे, है ना, 11 और 12. तो लास्ट एग्जांपल जो कि मैग्नीशियम की है, इसको करवाने का मकसद ये है कि इट इज पॉसिबल, नॉट कंपलसरी, इट इज पॉसिबल दैट इट कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन. So I hope if I give you the symbol of any atom, you can easily find out the number of electrons, protons, and neutron. बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं. Let's talk about the ions. Let's talk about ions, and the first of all, let's talk about the cations. Cations are positive or negative? Cations are basically the positively charged ion. ठीक है? Positively charged ion का मतलब, why they are called cations? If they are positively charged, what does this term cations means? No, NH4 positive is not metal. है ना? Why they are called cations? Because they move towards cathode in electrolysis. Cathode is negatively charged. They move towards cathode being a positively charged particle. So that's why they are called cations. और negative को क्या बोलते हैं? Because they move towards anode. So from electrolysis, they have a name of cations and anions. ठीक है? So cations have, can I say that cations have more protons and less electrons? Agreed or disagreed? True. And all cations are formed after the removal of electron. Okay? So that's why they have a positive charge. And after the removal of electron, they always have more protons and less electrons. Okay? Clear? So if I ask you a very simple question about Na1123, and if I ask you about how many protons, you should say 11. Number of protons कभी change नहीं होते.
हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, तो आप बोलेंगे सर 23 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 12। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो आप बोलेंगे 11 होने चाहिए थे, बट बिकॉज इट हैज अ चार्ज ऑफ +1, ठीक है, बिकॉज इट हैज अ चार्ज ऑफ +1, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। नाउ इट हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। सो ये हमने माइनस एक इलेक्ट्रॉन क्यों किया? व्हाई वी डिड दिस? ड्यू टू, yeah, due to +1 charge, ठीक है, one less electron due to +1 charge. If it would be +2 charge, कितने इलेक्ट्रॉन कम करते? 2, है ना? Let's do it. Mg12 24 with a charge of 2 plus, ठीक है। So प्रोटॉन कितने हो जाएंगे बेटा? 12। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? सॉरी 12, एंड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 12, बट बिकॉज ऑफ +2 charge we decrease 2 electron, subtracted 2 electron, ठीक है। So can I say that 2 less electrons because due to -2 charge, ठीक है, 2 less electron due to -2 charge. This is basically, no, let's talk about anions. Anions means they have more electrons and less protons, ठीक है। Anions have more electrons and less, and anions are basically negatively charged particle, ठीक है। They are negative ions because they move anode, which is a positive terminal of the battery in electrolysis. That's why they are called anions, ठीक है। Any common anion जो आपके जहन में आ रहा हो, जो आप जानते हो? Cl negative, proton number 17, nucleon number 35. So proton कितने होंगे? It never change, it's always same, 17. Neutron 35 minus 17 is 18. इलेक्ट्रॉन 17 होने चाहिए थे, बिकॉज ऑफ -1 चार्ज हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, है ना। नेगेटिव आयंस आर फॉर्म आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो हम इसमें लिखेंगे 1 मोर इलेक्ट्रॉन ड्यू टू -1 चार्ज, ठीक है बेटा। इज इट क्लियर? कैन यू मेक दिस वन ऑक्सीजन? 16 is a nucleon number, 8 is a proton number, okay, and the charge is 2 minus or -2, whatever it is. Can you find out the proton, electrons and neutron in this one? So try karo. Number of proton, ठीक है, let's do it. प्रोटॉन तो सेम होंगे ना, प्रोटॉन तो चेंज नहीं होते, तो प्रोटॉन्स आपके पास आ जाएंगे 1, न्यूट्रॉन आ जाएंगे, सॉरी 1 क्या कह रहा हूं, कितने होंगे भाई प्रोटॉन? 8, ठीक है। न्यूट्रॉन भी 8 होंगे और इलेक्ट्रॉन्स 8 होने चाहिए थे, because the proton number is 8, but because of the -2 charge हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ठीक है। तो हम इसको भी सर्कल करके यहाँ लिखेंगे कि it has 2 more electrons due to -2 charge, ठीक है बेटा। आई होप कि यहाँ तक बात समझ आ रही होगी, एंड यू कैन फाइंड आउट इजी है, वो लेवल्स में भी आप करते थे, यहाँ भी आप करेंगे। यू कैन इजीली फाइंड आउट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स if you have a neutral atom, if you have a positive ion, or if you have a negative ion. यहाँ तक लिखिए बेटा, क्लियर है ये?
अच्छा, एक बात और बताओ, छोटी सी वैसी रैंडम बात है कि लेट्स सपोज इफ आई हैव हाइड्रोजन with a proton number 1, nucleon number 1, है ना? So how many protons in this hydrogen you have? How many electron? Electron भी 1 होगा. It's a neutral hydrogen atom. And how many neutron? 1 minus 1 is 0. So this hydrogen is the only atom that do not contain any neutron. जिसके बाद neutron होता ही नहीं है. So अगर मैं कहूं कि you have H positive hydrogen with a charge of +1, अब क्या क्या होगा इसके पास? प्रोटॉन होगा एक, न्यूट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन इज 0, है ना? इलेक्ट्रॉन भी चला गया, जो था वो भी चला गया, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट H पॉजिटिव. दैट्स व्हाई अगर आपको याद हो, H पॉजिटिव आयंस को हम प्रोटॉन भी कहते हैं. ऑल एसिड्स आर H पॉजिटिव आयन डोनर्स, और एसिड्स को हम ओ लेवल में कहते थे कि ऑल एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स. So H positive ion do not contain anything else. Like it only has one proton and that's it. ठीक है, इसके पास ना कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके बाद ना कोई न्यूट्रॉन है, इसलिए H positive ion को हम प्रोटॉन भी कहते हैं. प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड. ये वैसी एक रैंडम बात बीच में आ गई थी. लेट्स टॉक अबाउट द मॉलिक्यूल्स, है ना? If I ask you कि भाई मुझे बताओ how many hydrogen, sorry, electron, proton and neutron you have in H2 hydrogen में, ठीक है? Hydrogen is 1 1. So how many hydrogen I'm talking about? I'm talking about 2 hydrogen atoms. So proton कितने हो जाएंगे? 1 plus 1. पहली एग्जाम्पल है इसलिए हम डिटेल में करेंगे. 2. इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 1 plus 1 is equals to 2. न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 0 plus 0 plus 0 plus 0 0, है ना भाई? सो इज इट क्लियर? सो फॉर एनी मॉलिक्यूल्स आई रिकमेंड कि उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं आप उनको सिंबल के साथ यू जस्ट स्प्लिट इट डाउन, ठीक है? और फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो. शुरू में थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन डू इट वर्बली, लेकिन दिस इज द वर्किंग एज अ लेक्चर दैट यू शुड हैव. नाउ इन अ सिमिलर वे, if I ask you about H2O, water molecule, how many electron, proton, and neutron you should have? On the same screen you have, but let's write it down. Hydrogen 1 1, hydrogen 1 1, and oxygen. बोलो भाई, प्रोटॉन नंबर क्या है ऑक्सीजन का? 8. और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन नंबर 16. सो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 1 plus 1, दो हाइड्रोजन के, प्लस 8 इज इक्वल्स टू 10. इलेक्ट्रॉन्स भी ऑब्वियसली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 10 ही होंगे. और न्यूट्रॉन आपके पास हो जाएंगे, न्यूट्रॉन, 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 हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन है? 0. दूसरे हाइड्रोजन में कितने हैं? 0. और ऑक्सीजन में कितने हैं? 8. तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8. सो दिस इज इट. बेसिकली प्रोटॉन 10 है, इलेक्ट्रॉन्स आर 10, एंड दिस इज 8. क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल जो आप मुझे करके दिखाएं, बट 2 more examples. NH3 and NH4 positive, ठीक है? नाइट्रोजन इज 7 14 एंड हाइड्रोजन इज 1 1. ठीक है, चलो जल्दी से ट्राई करो. ओके, NH3, yes you have प्रोटॉन कितने हो जाएंगे बेटा? सो यस, 7 फॉर नाइट्रोजन एंड 3 फॉर 3 हाइड्रोजन, सो 10 न्यूट्रॉन, 7 फॉर नाइट्रोजन एंड 0 which is equals to 7. इलेक्ट्रॉन 7 plus 3, ऑब्वियसली 10 ही होंगे बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल. ठीक है, NH4 पॉजिटिव में प्रोटॉन हो जाएंगे 7 फॉर नाइट्रोजन प्लस 4 फॉर हाइड्रोजन, सो 11. न्यूट्रॉन हो जाएंगे 7 फॉर नाइट्रोजन प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 7. इलेक्ट्रॉन्स 11 होने चाहिए थे, बट बिकॉज ऑफ +1 चार्ज हम एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, इट्स गोइंग टू बी 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना, ऐसे ही होना चाहिए. सो बेसिकली वी जस्ट सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ +1 चार्ज. ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 1 लेस
electron due to -1 charge. ठीक है? अच्छा, let's keep it here. एक चीज और आपको, sorry, हाँ, yes. Okay, this is basically the topical part. अभी हम इसको आगे continue करेंगे और okay, isotopes अभी पढ़ना है, but which isotope of an element is in the third period of periodic table contain the same number of neutrons as sulfur 1632? Question number 5. Out of these given atoms, which one contain the same number of neutrons as sulfur 1632? So can you tell me how many neutrons are there in a sulfur 1632? 32 minus 16 is going to be 16. तो इसमें है 16 neutrons. Now find out the same 16 neutrons in a given options. Out of which option you have 16 neutrons? तो आपको नजर आ रहा है कि 23 minus 11 is 12. So A is not an option. B is 12, not an option. 28 minus 14 कितना आ रहा है? 14 ही आ रहा है. So it's not an option. 35 minus 15 to find out the number of. So it is going to be 16. So D is the option in which, है ना? 31 minus 15 is going to be 16. So it does contain the same number of neutron as sulfur 1630. Easy? आसान था ना? So की क्या है? की ये है कि yes, they do ask question. ये A levels के पास पेपर है. They do ask question from the O level stuff as well. That's why it's very important कि हम उसे complete करके and then we move forward. Let's take okay, this is the question. 1, 2, यहाँ पर and लिखा हुआ होगा. I think it's a misprint. So it's 25. Okay, the diagram shows the possible path of the subatomic particles moving in an electrical field in a vacuum. Okay, so which diagrams are correct? Now look at the diagram number 1. You have electrons and electrons have a negative charge and it is moving towards the positive plate. है ना? Electron have a negative charge and it's moving towards the positive plate. I think this diagram is perfect. Okay. The second one, you have neutron remain undeflected. Yes, perfect. In the third diagram, you have proton moving towards the positive plate. So this is wrong. So 1 and 2 only is the correct diagram. ठीक है, ये दो चीजें पढ़ी थी आपने आज अभी, and you can see जो हमने पढ़ा straight forward as it is apply हो रहा है. Another question and you have to solve this one. The description about the phosphorus that skin cancer can be treated by the radioactive phosphorus, and they're asking about the number of electrons, protons, and neutron in phosphorus. Proton number 15, nucleon number 32 with a charge of 3 minus. So proton कितने होंगे? बोलो भाई. How many protons? Phosphorus में कितने proton होंगे? 15. So either this one or this one. ये दोनों तो हो ही नहीं सकते. ठीक है? Because it says 17 and 32. So this is either 15, 15. How many neutrons? 32 minus 15 is 17. So this one or this one. And how many electron? 15 होने चाहिए थे. Because of -3 charge, we have to add 3 more electrons. So altogether 18 electrons. So the right answer for this one is A. 15 protons, 17 neutrons, and 15 plus 3 because of 3 minus charge. ये plus 3 हमने क्यों किया है? Because it has a charge of 3 minus. So 18 electrons. सही है जी, समझ आ रहा है? Let's move forward and let's do one more question. I have to be selective क्योंकि अभी तो obviously chapter start भी नहीं हुआ एक तरह से. So कुछ questions हैं जो कुछ ही questions कर सकते हैं हम. ठीक है? So let's 48. ओके जी. इन विच स्पीशीज, स्पीशीज का मतलब पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है. ठीक है. नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऑल आर डिफरेंट. प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. लेट्स स्टार्ट विद द बी.
प्रोटॉन कितने होंगे चना 5, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5, तो ये तो हो ही नहीं सकता. इट कैन नेवर बी अ न्यूट्रल एटम because a neutral atom always contain the same number of proton and plus electron. वो दोनों सेम होते हैं. So it should not be a neutral atom. So A तो हो ही नहीं सकता. B की तरफ जाते हैं. B proton is 9, electrons are 9 plus 1 10 and neutrons are 10, 19 minus 9. So B में तो electron और neutron same हो गए. Let's move towards C, which is sodium. Proton is 11, electrons are 10. 11 होने चाहिए थे because of plus 1 charge, 10 electrons हैं and neutrons are 12. यही है, यही है. ठीक है. So it contain different. अच्छा, there is another statement about this. Can I say that Na positive contains more neutron than protons? Na positive. I'm talking about only about this one. Look at this. Can I say that Na positive contains more neutrons than protons and more protons than electrons? Okay. So if they ask you which of these contains more electron than proton and more proton than neutron, then you have to find out the number of electron, proton and neutron. वो find out करना होगा और फिर statement के साथ match करना होगा. ठीक है. That's how they sometime asking question in A levels. ठीक है. ये आप कर लोगे अब. In which species the number of proton, neutron, and electron all are different, so it should not be a neutral atom. है ना? Neutral atom तो नहीं हो सकता ना भाई. Why? Because neutral atom have the proton and electrons are same. So it should be K में चेक कर लेते हैं. प्रोटॉन है 19, न्यूट्रॉन है 39 माइनस 19, आई थिंक इट्स 20, है ना. इलेक्ट्रॉन्स 19 होने चाहिए थे बट बिकॉज ऑफ प्लस 1 चार्ज 18 हो जाएंगे. सो बेसिकली डी में इज द राइट आंसर दैट यू हैव प्रोटॉन 19, न्यूट्रॉन 20 एंड इलेक्ट्रॉन 18. सही है. So that's how we will move forward and keep doing it. So we keeping it till here and then we will continue it in the next class inshallah. Say